माननीय सांसद प्रखर शांडी। Respected Speaker, sir, honorable members of this House, and my fellow citizens. We gather here today to discuss a subject of utmost importance, that is non-performing assets or NPAs. While the government claims to have taken steps in this regard, the cracks in the foundation of the strategies are visible. Although these may have been pointed out earlier, this is only a summary of what my members want to present to the House. I would like to say a couple of lines. बुनियाद की दीवारें अगर कमजोर हो तो महल की ऊंचाई पर सवाल उठाते हैं। मर्यादा बनाए रखें, सदन की मर्यादा बनाए रखें। आप दोनों से मेरा ये रिक्वेस्ट है। The government proudly presents its initiatives such as Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), bank mergers, and the recapitalization of public sector banks. But I must ask, have these efforts truly addressed the root cause of NPA crisis, or are we merely papering over the cracks? Despite these steps, NPAs in public sector banks remain alarmingly high. These bad loans are not just numbers. They represent the dreams of farmers who couldn't pay their dues, the aspirations of small businesses that failed bankruptcy, and the trust of the common man betrayed by inefficiencies and cutthroat competition. I would like to repeat, we do not want to make the government or the ruling party look bad. We are just here for constructive criticism. So I would request, nay, I would pray them to kindly pay heed to my words and listen to some constructive criticism. There has been some favoritism in lending. The culture of favoritism, where big corporate defaulters get multiple lifelines, while small borrowers get to face the music, continues to plague our banking sector. आज भी आप जाएंगे महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव या पिछड़े जगहों पर, वहां पर जो है सरकार 50,000 से लेके 2 लाख रुपए के लोन पर भी किसानों के ट्रैक्टर्स और उनकी जमीन को हथिया लेती है। और बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन और टाइकून्स के करोड़ों, 100 हजारों करोड़, जी जनाब आप ही को एड्रेस करके कह रहा हूं मैं, हजारों 100 हजारों करोड़ के लोन्स को माफ कर देती है। उसका डेटा प्रेजेंट मैं इनका खंडन करना चाहूंगा। मैं आपका इजाजत लेके इनका खंडन करना चाहूंगा। हमारे बहुत बड़े बड़े कंपनी जो है उनसे भी हम लोग ने कर वसूल किया है। माननीय स्पीकर सर, asset recovery, the third point. The IBC has brought some progress, but the recovery rate still hovers around 40 to 45%, which means the majority of funds are not being reclaimed. जहां इलाज आधा हो वहां बीमारी बढ़ती है, जहां इलाज आधा हो वहां बीमारी बढ़ती है, बिना जड़ काटे कोई शाखा हरी क्यों है? Practical and rational solutions. I would also like to give some solutions. First is digital transformation. We have done digital transformation. We have done digital transformation. आज के समय में हम लोगों ने इतना डिजिटली इंडिया को आगे बढ़ा दिया है कि छोटी सुई भी खरीद सकते हैं तो उसमें भी हम लोग UPI यूज करके पे करते हैं। Honorable Speaker sir, I don't think they are well versed in the languages which we use in the parliament, because I already said something in the past which is a kind of a disclaimer for them. They did not pay heed to my words, so I can't help it. Anyways, digital transformation. It is imperative to modernize our banking infrastructure with AI and blockchain to predict loan defaults and reduce frauds. These tools can provide a clearer picture of the borrower's credit request. Strengthening regional banks. Instead of consolidating into a few larger entities, regional banks must be empowered to serve local businesses and farmers effectively. Accountability and transparency. Create a transparent mechanism to monitor high-value loans. Public disclosure of major defaulters will deter corporate misbehavior. Focus on MSMEs. MSMEs contribute significantly to the economy, but still struggle to secure credit. A dedicated fund for MSME lending, monitored by an independent body, can address this issue. Faster legal proceedings.
streamlining legal processes under the IBC to expedite asset recovery and minimize losses. साहस चाहिए सुधार के लिए, बस दावों से होते सपने पूरे नहीं. Respected members, the government must decide that true reform demands bold steps and genuine intent. The economy's backbone lies in the robust financial sector that serves everyone, be it rich or be it poor. Honorable member, please. माननीय सभापति जी, मैं इनकी बातों को खंडन करूंगी. जैसा कि इन्होंने मुझे कहा कि मैं शेर बोलती हूँ, मुशायरे करती हूँ, तो फिर वो शेर और शायरी की सहायता से अपनी बातों को यहाँ क्यों रख रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगी, जब ये खुद अपोज कर रहे हैं तो मुझे क्यों बोल रहे हैं? Honorable Minister, please take your seat. सभापति महोदय, परिवारवाद की बात करने वाले जो परिवारवाद पे खुद टिके हुए थे, आज परिवारवाद की बात करते हैं. Please take your seat. Please take your seat. I would like to request- request the leader of the opposition, please conclude your speech within 2 minutes. In conclusion, let me say, सूरज उगने का समय है, अंधेरों को हटाना होगा, जनता के विश्वास जीतने को सिस्टम को सुधारना होगा. Therefore, now I plead the honorable government to put aside their paltry ego, quote unquote self-respect, and with some integrity, join hands to work towards nation building. We are the legislature of this country. We have immense potential to harness our nation's capabilities, and we have been given this power by the honorable Constitution of India, by the people of India. So let us join hands together and work towards nation building rather than throwing dirt on each other. Moreover, I would like to add a point. I was not the Prime Minister, or I was not in the government for 55 years. So instead of blaming me, they should give solutions instead of throwing the problems. In that case, everyone can throw the problems to the British. The British can throw it to the Mughals or to the Guptas. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले डाटा भी रखा, आज का भी डाटा रखा और इनका सुझाव भी माना अध्यक्ष महोदय कि सरकार में जो बिल लाई है उस पर क्या क्या सुधार हो सकते हैं. हमने हमारी जितने भी सांसद अध्यक्ष महोदय वो सुबह से यही बात कह रहे हैं कि आपकी बात को हम मानेंगे. हमने पिछले साल का भी डाटा रखा, इस बार का भी डाटा रखा, तभी नेता विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आ रही है. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष महोदय, Honorable member, please conclude your speech. अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार को क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है. We are taking it positively. We are taking it positively. We are considering. और 20 सेंटेंस पे उछल कर माइक लेना आसान है महोदय. शांति हो जाए. बात सुनकर उसे कबूल करना आसान काम नहीं. मैं मानता हूँ. हम कबूल कर रहे हैं. आप जय हिंद, जय भारत, जय संविधान. Minister साहब. Honorable Prime Minister. Honorable Speaker, as everyone present here have listened how our government have presented a beautiful schemes that build profits for our country, that reduce the NPAs than the previous time. We have good amount of changes. As our opponent gives some suggestions for the schemes. As a leader of the ruling party, I would like to say we will conclude that suggestion for the betterment of our country. But I would like to say that we have presented enough data that no opposition can say we didn't did anything. आपने किया क्या है ये कहना आसान है. हर एक चीज़ जैसे अपोजिशन ने कहा कि आप पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म को लीजिए, तो हम पूछना चाहेंगे क्या एक ही बात को रटना कि आपने किया क्या है, डाटा देने के बावजूद एक बात को रटने से क्या एक डेवलपमेंट होगा इस कंट्री का? माननीय स्पीकर महोदय, हमारा मकसद शुरू से यही रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि आप और क्या कर सकते हैं. हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्या करें. आपकी बातों को ऐड करेंगे अपने सजेशन में, बट एक ही बात पूरे सेशन में दोहराना. Just a moment, Prime Minister. When the Prime Minister is speaking, I expect you all not to interrupt her. And I hope that I don't have to request you again. Please continue.
the positive data that shown by our ruling parties are for the betterment of our country. We will conclude the suggestion of the opposition and we expect the opposition to make a better criticism from tomorrow instead of asking one again and again. Our ministers have given perfect, accurate data. Everyone present here can tell we are making some development. Talking about tax, saying what we done, is it the positive criticism? These two words not gonna change our world. Now, our country is on the path of becoming Vishwaguru. We have surely done some development. That's why we are standing and present ourselves as a global South leader in front of the world. Before, India was struggling. Indeed, it was not our party, but some other party. But now that India is on a path of development, I want more strong opposition criticism to make my country better. Not some mere criticism what you have done, even after showing the data. Every minister present here showed data. What have they done? Just ask that what have you done? आपने किया क्या? एक opposition का बहुत प्रिय वर्ड है जुमला. ये बात डाटा देने के बाद भी ये कहते हैं, 2 बार हम इनके ये जुमले शब्द को हम सुन रखे हैं. ये जुमला शब्द दोहराने से देश की जो गतिविधि है, देश की जो ये बढ़ाव है, ये जो डेवलपमेंट की ओर जो ये विकसित हो रहा है, ये नहीं बढ़ेगा. 3 सेंटेंस दोहराने से इंडिया डेवलप नहीं हो जाता. I hope that the opposition bring more better criticism from tomorrow as we presented more data than they expected. So I would like to end my speech here and hope that no one will say we didn't present anything. Why do I have to repeat the line again and again? Honorable Finance Minister. थैंक यू प्राइम मिनिस्टर. आदरणीय सभापति महोदय, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को ये रिप्लाई देना चाहूँगा. जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में क्रैक्स है. उन्होंने कोई डेटा प्रेजेंट नहीं किया, पर मैं फैक्ट चेक के द्वारा उसको हम देखिए बताता हूँ. जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का कोई अचीवमेंट नहीं है. जब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया है, 3.5 लाख करोड़ वर्थ ऑफ बैड लोन्स रिकवर हो चुका 8 साल में. ये बोलते ही क्रैक्स है. आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के पहले स्पीकर कल डेटा प्रेजेंट किया जाएगा. रुकिए. ये कहते हैं कि आईबीसी का कोई फायदा नहीं हुआ है. रिकवरी रेट 26% से बढ़ के 43 से 49% हो गया है. ये कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है.